Good evening, everyone. Welcome to your own platform, that is Exam Norm. My name is Madhav. I welcome you all in the next session of Finance Norm series. What is it, sir? It is basically a finance current affairs series where we cover the finance current affairs related to the examinations like RBI grade B, SEBI grade A, as well as other regulatory bodies. This is a session where we cover all the important circulars, all the important master directions, all the important updates from RBI as well as other regulatory bodies. So before I start with the discussion, may I have a thumbs up in the comment section that I'm audible, visible, everything is fine, we are good to go, so that we can start the discussion without any further delay. Today's session is extremely important because I have few easy but really very important news which are having great possibility that they can be asked in the examination on 13th of June. So before I start, I would request you quickly copy the link of this session, share it with your friends so that more and more students, they can join us live in this particular session and they can also learn the most important topics for the upcoming examination. तो आज का जो सेशन है इसमें थोड़ा सा figures, facts ज़्यादा है, but don't worry, I will be marking down all the figures, all the facts which you need to remember. उसके अलावा जो मैंने facts या figures आपके साथ share किए हैं in the PDF, that is with the agenda that you should have the clarity, you should have the clear understanding of the particular news. I hope you guys have watched the previous session, and in the previous session you might have gone through with the annual report of RBI. The PDF is also shared. I hope you have checked the PDF, and if haven't, then go back and check the PDFs after this particular session. Now the question is, a question है comment section में देख लेते हैं. The question says PPI and UPI double counting concept. See, if you are transferring the funds into the PPI, that means prepaid payment instruments. In that particular case, that transaction will be calculated, and when you will be making a transaction through PPI, then also it will be calculated. The point is, when we use a word digital transaction, it doesn't mean that you are making a transaction with the agenda of consumption only. Agenda of digital transaction is basically transferring the funds from one medium to another, or one account to another, one holding unit to another, with the help of digital payment interface. So if you are transferring the funds from your bank account into PPI, that is a transaction which you are doing. Then from PPI you're making the payment, that is again a transaction. So it's not a double counting. Technically they both are different transactions which are ought to be included. Next is monetary penalties on banks are income or not. See, I would ask Saurabh, please check the annual report. This point has been mentioned in the annual report. एक बार आप check करना, अगर आपको annual report में ये point ना मिले तो एक बार दोबारा raise करना. I have included this point in the PDF which I have shared few hours ago. So go and check. If you get the answer, it's fine. Otherwise, I will be taking this question again. I hope it's fine. चलो ठीक है जी. So let's begin the discussion. So before I start, how many of you have watched the annual report? How many of you have watched the annual report? I hope most of you have went and check out the annual report. That is a really very important topic for your examination. Don't miss that topic because direct questions will be asked from the topic itself. Chalo ji. So let's do not wait further. Let's get started with the discussion. So the first news we have today is actually RBI has presented the BSR 1 as well as BSR 2. What are these? So these are the basic statistical return, and we have received the annual basic statistical return just before the examination. So we have to cover both of them because they are important. We have to understand and we have to analyze these data very closely so that we can answer the questions in the upcoming examination. So I have created these notes in such a manner that you can easily identify the important facts, the important figures which you need to remember so that you can answer the questions in the exam. ठीक है, तो इसमें आपको कुछ चिंता नहीं करनी. You just stay with me. I will be giving you 5 to 7 facts, figures which you have to remember from BSR 1 and BSR 2. बाकी भले आप छोड़ देना, कोई टेंशन नहीं है.
So what is the news all about? So Reserve Bank of India has recently released the annual basic statistical return 1 on the credit by schedule commercial banks. तो ये जो BSR 1 है, it is for credit, and BSR 2 gives the deposit figures, gives the deposit status of the scheduled commercial banks. And if I talk about scheduled commercial banks, it includes public sector banks, private banks, as well as foreign banks, and even it includes the RRBs as it is clearly mentioned on the screen. So this return covers the key details, that what are the different types of loan accounts, what are the different types of organization they are borrowing, for what occupation or activity they are borrowing, category of the borrower, district and population group of the place where credit is used. Along with this, in the recent round, RBI has included the new district level gender-wise data series on the outstanding credit to the individual, which is really very important. कि भैया district-wise, gender-wise, district level gender-wise data has also been released. Obviously, we will not be remembering that data, but we must know that this newly addition or this new addition has been done by RBI. तो ये पहला point है which you need to remember. Second point is it is presented for scheduled commercial banks including RRBs. Bus. These two things you need to remember from here. Moving on to the next point. The next point shows the credit growth. If I talk about the credit growth, you have to remember the bank credit has grown, or it has witnessed 14.1% year-on-year growth at the end of March 2026, which was earlier 11.1%. So this data is important. You need to remember. One of the important outcome was that the share of loan carrying interest rate below 9% has crossed a value of 64.2%. How it is possible? So it is possible because of the obvious reason. RBI has revised its monetary policy. Repo rate has been decreased by 100 basis point, because of which banks lending rate has decreased. Along with that, 40% of public sector 40% of priority sector lending targets, which have been collectively achieved at 45%. तो obvious है कि sir 45% of the total A and BC or 45% of the loan is obviously below 9%, और उसके अलावा बाकी लोन भी दिया गया, जिसकी वजह से overall loan with less than 9% has witnessed a growth, जिसकी वजह से out of the total loan, 64.2% of loan is witnessing an interest rate or a lending rate of 64.2%. ठीक, अब अगर मैं बात करूं across the population group, so credit growth remained strong across all the population, namely rural, semi-urban, urban, as well as metropolitan. If you ask me that this categorization of urban, semi-urban is done on what basis? If I answer this question, the categorization of urban, semi-urban is done on the basis of population itself. And in that particular case, you need to remember, if the population is up to 10,000, it is rural. If the population of the area is 10,000 to 1 lakh, it is semi-urban. If the population is 1 lakh to 10 lakh, it is urban. And if the population is greater than 10 lakhs, then it is metropolitan. ठीक है जी, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए रिगार्डिंग द पॉपुलेशन, इट इज ग्रेटर देन 10 lakhs, it is up to 10,000, semi-urban is 10k to 100k, and urban is 100k to 10 lakhs. और अगर 10 लाख से ज्यादा होगा तो उस केस में we will be talking about, or we will be giving it a title of metropolitan city. That is absolutely clear. Okay, moving on to the next point. The lending shares of the bank branches across the population group were 9.4% lending is done in the rural areas, 14.5% in the semi-urban, 17.9% in the urban areas, and 58.2% in the metropolitan city. So obviously अगर मैं कहूं पॉपुलेशन वाइज, सबसे कम पॉपुलेशन रूरल एरिया में, देन सेमी अर्बन, देन अर्बन, एंड देन मेट्रोपॉलिटन. इन अ सिमिलर मैनर, इफ आई टॉक अबाउट द लोन, हाईएस्ट लोन
highest loan is taken up by, one second, highest loan is obviously given in the metropolitan cities, then urban cities, then semi-urban areas as well as then rural areas. तो ये जो flow of order है, that flow of order is same. जितनी ज्यादा population उतना ज्यादा loan. तो highest loan has been taken by metropolitan. It's not the first time it is happening. So this shows that metropolitan branches, they account for the largest share of bank lending while the credit growth was visible across the entire country. लेकिन अगर हम बात करें सबसे ज्यादा lending was done by which branches of the bank? So that is the metropolitan branches of the bank. मजा आ रहा है, समझ आ रही है बातें? I hope you are getting my point. Guys, I hope you are getting my point. One second. Okay, that's fine now. ठीक है, अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं. अगला पॉइंट क्या कह रहा है सदी? अगला द नेक्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट क्रेडिट ग्रोथ बाय द बैंकिंग ग्रुप. एंड इफ आई टॉक अबाउट द क्रेडिट ग्रोथ बाय द बैंकिंग ग्रुप, अगर आप ध्यान से देखेंगे, private sector banks has witnessed a growth of 12.3%, but I have not highlighted this data. That means there is no need to remember it. There is no need to remember it. लेकिन one thing which you need to remember, is the growth categorization, or I would say the growth flow from descending to ascending, or from ascending to descending order, whatsoever you remember and whatever way you remember, it's fine with me. So in that particular case, I would come up in this manner that the answer to this particular question will be the highest lending is done by public sector banks in terms of value. The highest lending is done by public sector banks in terms of value. But if I talk about the growth, in that particular case, things are pretty different. So the highest growth year-on-year basis has been recorded. The highest growth year-on-year basis has been recorded with which banks? Then my answer to this particular question would be public sector banks. Then year-on-year basis, second category is foreign banks. Then we have private banks, and then we have RRBs. This is the flow for what? So this is the flow for growth of credit on year-on-year basis. तो आपको percentages नहीं याद रखनी. These percentages are not important for you. You just have to remember the flow. If you are remembering the flow, that is going to solve the purpose. Nothing else is important or nothing else is required. Is it fine? Is it fine, everybody? Is it fine, everybody? May I have a reply, please? ओके, ये याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं. पब्लिक सेक्टर बैंक का जो ग्रोथ है इन क्रेडिट ग्रोथ, दैट इज अराउंड द बैंक क्रेडिट ग्रोथ्स ओनली, ओवरऑल बैंक क्रेडिट ग्रोथ्स ओनली. और अगर हम उसके बाद बात करें, देन वी हैव द फॉरेन बैंक्स, एंड देन वी हैव द प्राइवेट बैंक्स. आई होप दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया इज क्लियर टू यू. So in this case, one second. This is going to be in this manner. It is foreign banks on the first, and then we have public sector banks. This is witnessing a growth of 14.7%, and it is around 14.1% only. This is 12.3%. And in case of RRBs, the growth is very small. This is how you need to remember the things which are going to be asked in the examination. ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक,
Small finance bank, they have increased their share in the total credit, and in the total credit their share is now 1.6%. अब अगर 1.6% is the share of the small finance bank, then the question comes up कि सर बाकी बैंक्स का यहाँ पे क्या शेयर है. So if I talk about the sharings, so in this particular case the highest share in the credit is with the public sector banks, then we have private banks, then we have foreign banks, and then we have small finance banks. Then we have small finance bank. तो याद रखना highest share is with the public sector bank in terms of what? Sir, in terms of total outstanding credit. तो आज की डेट में जो सबसे ज्यादा outstanding credit है with the public, out of the total outstanding credit, more than 50% is at the name of public sector banks. लेकिन अगर मैं ग्रोथ की बात करता हूं, क्रेडिट ग्रोथ की, तो उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन से बैंक में देखी गई है, कौन सी कैटेगरी में देखी गई है, देन द आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फॉरेन बैंक्स. ठीक है जी, ये 2 पॉइंट्स याद हो गए. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अगला पॉइंट क्या कहता है? नाउ इफ आई टॉक अबाउट पर्सनल लोन, सर इन केस ऑफ पर्सनल लोन द शेयर ऑफ पर्सनल लोन इज 30.7%. What is a personal loan? So the loan which is borrowed for constructing house, or it is borrowed to purchase a house, or it is borrowed for the renovation. Then education loan, vehicle loan, personal credit cards, consumer durable loans, and other personal loans. So उनका जो share है, that is what? So that is 30.7% in the total credit. Moving ahead, if I talk about the loan to the private sector, the loan to the private sector accounted approximately 25%. Loan to the private sector accounted approximately 25%. If you talk about the growth, so growth in personal loan is 12.9%, and growth in case of foreign banks, in case of private corporate sector is 15.5%. but we can ignore this data. इतनी डेप्थ में जाके आरबीआई क्वेश्चन नहीं बनाएगा. वी आर एक्सपेक्टिंग दैट, वी आर प्रेइंग फॉर दैट. अब अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर सेक्टर की, सो सर एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है in the total outstanding, that is 12.9%, और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो शेयर है that is 22.4%. That is 22.4%. Now on the other side, if I talk about housing sector, तो यहाँ पे सर ये जो हाउसहोल्ड सेक्टर है, what is this household sector? Sir, household sector include not only the individuals, but along with individuals, it include the other entities as well. Other entities में कौन आता है? Sir, Hindu undivided families. Other entities में कौन कौन आता है? Then my answer is, sir, Hindu undivided families, along with Hindu undivided families, who all are included in this particular category. Sir, it includes the proprietorship, small businesses, small businesses which are owned by individuals or which are owned by one or more than one individuals. Then we have the joint borrowers who are borrowing jointly. तो अगर मैं कहूं इंडिविजुअल का कितना शेयर है, सर इंडिविजुअल का जो शेयर है इन द टोटल बैंक क्रेडिट, इट इज 47.8%. हाउसहोल्ड सेक्टर का कितना शेयर है? 58.6%. तो अप्रोक्सीमेटली 10.8% is the share of these entities, which include HUF as well as I would say proprietorship, small businesses which are owned by individuals as well as the joint borrowers. ठीक है जी, क्लियर हो गया ये पॉइंट. तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है. उसके अलावा अगर मैं बात करूं in category of total loans, what is the percentage of term loans? So term loan basically means the loans which are of timeline greater than 1 year. So it is 62.8%. The rest of the loan is of timeline that is less than 1 year. So 62.8% is the total loan which is considered as term loan, which is termed as term loan. उसके अलावा अगर हमसे कोई पूछे कि individuals में what is the percentage of female borrowers, so the percentage of female borrowers is 24.7%. अगर 100 individuals ने लोन लिया, which is 47.8% of the total borrowers, उन 100 में से 24.7% are none other than women. So answer to this particular question is women borrowers are 24.7%. तो आपको याद रखना होगा क्या? Public sector bank is the
Public sector bank is holding the highest outstanding loan, then private sector banks, then we have foreign banks, as well as then we have the small finance bank. अब इसमें एक और चीज आ जाती है, वो क्या सर? एक और चीज ये आ जाती है कि अगर हम सेक्टर वाइज जाए, तो हाउस होल्ड सेक्टर is on the first percent in terms of percentage, individual borrowers is on the second. After that, we have the private corporate sector, then we have the industrial sector, then we have agriculture and allied services. Now you must be wondering कि सर ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर आपने लिखा है, how it is different from the private corporate sector. So in the case of industrial sector, it depends on type of activity. It depends on type of activity, and in case of type of activity, I'm talking about activities like manufacturing companies are included, mining companies are included, electricity generation companies are included, construction companies are included, infrastructure projects, and even MSMEs are included in this particular category. But on the other side, the moment I say private corporate sector, so private corporate sector includes the loan given to, it includes the loan given to private companies, public companies which are privately owned, public companies which are privately owned, as well as the corporate groups. If they are borrowing, then they will be coming under private sector, or they will be coming under private corporate sector. अगर आप ध्यान से सोचें तो हाउसिंग सेक्टर में ऑलरेडी इंडिविजुअल्स इंक्लूडेड है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑलरेडी, most of the industrial sector is included in the private corporate sectors only. But if the specific category wise question is asked, then you should be in a position 58.6%, 47.8%, almost 25%, 22.4% and 12.9%. This slide is very important. This slide is very important. इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो जितना मैंने हाईलाइट किया है उससे आएगा. अगर आप गिनोगे तो 7 या 8 डेटाज है विच यू नीड टू रिमेंबर. इससे ज्यादा कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है. सो आई हैव डन द होमवर्क फॉर यू. देयर इज नो नीड टू वेस्ट योर टाइम. वॉट एवर आई हैव हाईलाइटेड दैट इज मोर देन सफिशिएंट. इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मीन्स ये वॉल्यूम पे ही तो है यार. टोटल बैंक क्रेडिट, तो टोटल बैंक क्रेडिट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ लोन नहीं है. अगर होता तो यहाँ पे होता टोटल नंबर ऑफ बैंक क्रेडिट्स. दिस इज सेइंग टोटल बैंक क्रेडिट इज ऑलरेडी वॉल्यूम. इट्स ऑलरेडी द वॉल्यूम, और आई वुड से इट्स ऑलरेडी द वैल्यू, नॉट वॉल्यूम, सॉरी, इट्स ऑलरेडी द वैल्यू. तो अगर मान लो 100 करोड़ का टोटल लोन है तो उसमें 58.6 करोड़ का लोन हाउस होल्ड सेक्टर के पास है, इंडिविजुअल्स के पास 47.8 है विच इज द पार्ट ऑफ 58.6% ओनली, प्राइवेट कॉर्पोरेट्स के पास 25% है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के पास 22.4%, जिसका कुछ हिस्सा ऑलरेडी कवर्ड है प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में और बाकी बचा एलाइड एक्टिविटीज. इसीलिए जो टोटल है इट इज नॉट इक्वल टू 100 बिकॉज दीज कैटेगरीज दे आर डबल काउंटेड. हाउसिंग सेक्टर में ऑलरेडी, हाउस होल्ड सेक्टर में ऑलरेडी इंडिविजुअल्स काउंटेड है, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑलरेडी काउंटेड है, मोस्ट ऑफ इट, or that is the reason the total is not 100%. I hope you're getting my point. Chalo. So let's discuss a question on the same. With reference to the RBI annual report BSR1 on the credit by scheduled commercial banks for March 2026, consider the following statements. Bank credit growth increased to 14.1% in the end of March. That is correct. The share of loan carrying an interest less than 9% has increased to 64.2%. Correct. Personal loan accounted for 47.8%, which is more than 40%. That is correct. Credit growth in the agriculture sector, sir, we don't know. We don't know because we haven't learned the growths. So let's mark it a point of doubt and let's try whether we will be able to solve the question or not. Metropolitan branches accounted for the largest share, accounted for the largest share of lending at 58.2%. This is correct. This is correct. अगर मैं यहां से देखूं तो मेरा आंसर क्या बनना चाहिए? 1, 2, 3 एंड 5. अगर मेरे पास 1, 2, 3 एंड 5 ऑप्शन है देन इट विल बी फाइन. अगर मेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं है, अगर मेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं है तो क्या फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? बताओ जरा सोच के. फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? ऑप्शंस को ध्यान से देखो, ऑप्शन से आपको आंसर मिल जाएगा. यू विल गेट द आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस.
अच्छा जी, आप भी कंफ्यूज हो गए। अब मैं आपको बताऊं, ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज रिटन एज पर्सनल लोन। मैंने क्या बोला, इंडिविजुअल बोरोवर। तो आप कंफ्यूज क्यों हो गए? इंडिविजुअल बोरोवर का शेयर इज 47.8% ऑफ द टोटल बैंक क्रेडिट, लेकिन जो पर्सनल लोन है, उसका शेयर 40% कहां है भाई? उसका शेयर 40% कहां है? देखो जरा, अगर मैं पर्सनल लोन के शेयर की बात करूं तो पर्सनल लोन का शेयर कितना है सर? दैट इज ओनली 30.7%। पर्सनल लोन का शेयर इज ओनली 30.7%। तो फर्क है ना, समझ आया? तो इसमें अगर मैं कहूं तो ऐसा होगा, हाउस होल्ड सेक्टर is greater than individual borrower, is greater than personal loan, is greater than private corporate sector, is greater than industrial sector, is greater than allied agriculture and allied services. ये क्या है सारे के सारे सर? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल बैंक क्रेडिट। आई होप नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। समझ आया? अरे समझ आया। अगर ये समझ आया तो उसके बेसिस पे क्या होगा सर? उसके बेसिस पे हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो तो हो गई गलत। अब हमें फोर्थ स्टेटमेंट का पता नहीं कि वो सही है या नहीं, तो आइडेंटिफाई करें क्या हमारे पास 1, 2 एंड 5 कोई ऑप्शन है? 1, 2 एंड 5 कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। तो आई विल गो विद ए ऑप्शन, क्योंकि जो मेरे हिसाब से सही है वो एक इंडिविजुअल ऑप्शन है ही नहीं। देन आई हैव टू गो विद द ऑप्शन जहां पे मेरा 1, 2, 5 हो, और मेरा 1, 2, 5 इज ईदर एन ई और ए। हो नहीं सकता, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये मैंने याद किया, ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट मुझे पता नहीं थी, तो ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गई बिकॉज ऑफ द ऑप्शन। ये दिमाग यूज करना एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यू वोंट बी इन अ पोजीशन टू आंसर द क्वेश्चंस करेक्टली। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ आ गया? आगे बढ़े। ठीक है, तो अब मैं दोबारा बता देता हूं। अगर हमसे कोई पूछे हाउसिंग सेक्टर हाईएस्ट, देन वी हैव individual borrowers, then we have personal loan, then we have private corporate sector, then we have industrial sector, then we have agriculture sector. ये परसेंटेज, ये इनका फ्लो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट। और सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है दैट इज इन फॉरेन बैंक्स, देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, देन प्राइवेट बैंक्स एंड सो ऑन। तो हाईएस्ट credit growth is recorded with foreign banks. The reason is quite obvious. What is the obvious reason? So the obvious reason is foreign bank, they are more connected with the foreign depositors, and they prefer to deposit in a foreign bank when they are depositing in India. And due to the depreciation of currency, foreign deposit has increased in the country. और अगर foreign deposit increase हुआ तो वो foreign banks में हुआ। और इसके अलावा एक रीजन ये भी है कि जो फॉरेन बैंक्स हैं, दे आर जनरली होल्डिंग द अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स, एंड द फॉरेन इन्वेस्टर्स हु आर मेकिंग द डिसइन्वेस्टमेंट in the Indian companies, in the Indian stock market, they are investing in the foreign banks only, or they are depositing or holding their funds in the foreign banks only. Screenshot ले लो, take the screenshot for the given question, and we will be taking this up in the next class as a homework. 1, 2, 3, 4, 5. That's it. Let's go. अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगली न्यूज है सर, दैट इज अगेन BSR 2। पहले हमने क्या पढ़ा? BSR 1, that was basic statistical return on credit. Now we are talking about basic statistical return on deposits, again with the scheduled commercial banks, including RRBs. It includes the data of current deposit, saving deposit, term deposit, ownership of the deposits, age-wise distribution, maturity pattern, deposit size, interest rate distribution and what not. लेकिन हम उसमें सिर्फ उतना ही याद करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगला पॉइंट जो यहाँ पे याद करना है वो क्या? फॉर द फर्स्ट टाइम RBI has introduced the district-wise gender-based data series on deposits held by individuals. This is what you need to remember. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसमें से कौन कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला जो डेटा इंपॉर्टेंट है, आई एम मार्किंग इट डाउन, द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन ओवरऑल बैंक डिपॉजिट is 11.5%.
which is more than the previous year, but less than the credit growth. So credit growth is greater than deposit growth, and that is a point of worry for the banks because their credit is growing more than the deposits. Further, bank across all the population categories, rural, semi-urban, urban, they all have recorded double-digit deposit growth, which is reflecting that yes, deposit is growing, but credit is growing faster than deposit. What are the major changes in the deposit? So first of all, what is the share of saving deposits? So the share of saving deposits was 34.6% in March 2022, but now it has reduced to 28.7%. It has reduced to 28.7%. Term deposit share was 55.2%, but now it has increased to 61.6%. तो इसका मतलब सबसे ज्यादा डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट के फॉर्मेट में है. उसके बाद जो हमारा डिपॉजिट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, देन वी हैव इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट. तो यहां से हम बहुत क्लियरली बोल सकते हैं term deposit include recurring deposit, fixed deposit. So RAFA deposit is greater than CASA deposit, or RAFA deposit is 61.6%. तो इसका मतलब CASA deposit will be what? So that will be around 38.4%. That will be around 38.4%. अब एक क्वेश्चन का आंसर दो. If you are a bank, what type of deposit would you prefer? For you, RAFA deposit is more favorable, or CASA deposit is more favorable. Sir, for the bank, CASA is more favorable because these deposits, they have lower rate of interest. So बैंक की liability जो है उस पे interest rate कम है. This is the first benefit. But the first benefit of RAFA is, sir, RAFA का जो deposit है that is more stable and CASA deposit is more volatile. कभी भी withdraw हो रहा है, जब पैसा चाहिए on demand you are withdrawing it. So bank cannot choose either of them. Bank cannot choose either of them, but bank will try to increase CASA in comparison to RAFA, but that doesn't mean कि RAFA को zero कर दो. That doesn't mean CASA को zero कर दो. They should be in a balanced form. और balance क्या कहता है? Balance कहता है कि CASA should be greater than RAFA. अगर ये percentage कुछ ऐसी होती, then I would say the banking sector would have been doing well. But right now, banks, they have higher side of their liability with higher rate of interest, because जो rate of interest है on term deposit is greater than what? So that is the demand deposit accounts. So current account 9.7%, it has fallen down. बट ठीक है, ये परसेंटेजेस अगर आपको याद रहे तो बढ़िया, ना याद रहे तो एटलीस्ट ये जरूर याद कर लेना. ये और सेविंग्स अकाउंट वाली, करंट अकाउंट वाली ना भी याद रहे तो छोड़ देना, कोई बात नहीं. अब इसके बाद इफ आई मूव अहेड, नाउ आई टॉक अबाउट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स. सर, फॉर एवरी न्यू डिपॉजिट, अगर मैं आउटस्टैंडिंग लोन की बात करूं तो आउटस्टैंडिंग लोन में सबसे ज्यादा लेंडिंग किसने की है? सबसे ज्यादा लेंडिंग की है पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने. सबसे ज्यादा लेंडिंग की है किसने? पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने. इन अ सिमिलर मैनर इन केस ऑफ डिपॉजिट्स आल्सो, सबसे ज्यादा जो डिपॉजिट एक्सेप्ट हुए हैं या एक्सेप्टिंग हो रहे हैं, टुडे आल्सो द न्यू डिपॉजिट व्हिच इज एक्सेप्टेड, हाईएस्ट डिपॉजिट इज एक्सेप्टेड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टोटल डिपॉजिट. तो अगर मैंने आज 100 रुपए डिपॉजिट किए, हम सब ने मिलकर आज बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट किए द इंडियन बैंकिंग सेक्टर, तो उसमें 100 रुपए में से 50 रुपए या 50.8 rupees will be deposited in the public sector banks. On the other side, for regional rural banks, they are losing their share in the total deposit. Reason is quite obvious, due to limited services they are providing. And the other banks, they are growing fast. Even the other non-banking financial institutes, they are growing fast, which are providing a better avenue for the depositors to deposit, and that is the reason RRBs, they are losing their share. अब अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था, in the total loan, highest outstanding is with the housing sector. In a similar manner, in total deposits, the highest deposit is again done by the housing sector. So housing sector is on the first in both the categories. Percentage is almost same. Here we had the percentage of around 58%, and here we have the percentage of around 59%. So they are almost the same. Along with this, very important data, the rise in
deposits of non-financial sector. Deposits of the non-financial sector means the deposits of the non-financial sector, the share of deposit held by non-financial sector or the non-financial entities, those entities which are not the financial institutes, is what? Sir, it has increased to 18.5%, which is again a data, which is again a good data which you need to remember. अब अगर मैं टर्म डिपॉजिट की बात करूं तो कभी आपने सोचा है कि इंडिया में जो टर्म डिपॉजिट्स है वो सबसे ज्यादा कौन से कैटेगरी में, जैसे अगर मान लो मैंने डिपॉजिट किया तो मैंने उनको कैटेगराइज कर दिया, अप टू 1 लाख, अप टू 5 लाख, अप टू 10 लाख, अप टू 1 करोड़, अप टू 5 करोड़, यू विल बी shocked to know that out of the total term deposit, 34.8%, 34.8% of the deposit are of value greater than 5 crores. तो 5 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ से ज्यादा वैल्यू के जो डिपॉजिट्स है वो कितने हैं? 34.8% of the total deposits. This you need to remember. And the lowest is up to 1 lakh. The lowest is up to 1 lakh and it shares the data with 3 to 5 crores. It shares the data with 3 to 5 crores. अगर मैं 1 करोड़ से ज्यादा की बात करूं, then I will be adding them all. And if I add them all, this is 46.3%. So these terms are important. 5 crore is 34.8% of total deposit, up to 1 lakh is 3.2% of total deposit, and up greater than 1 crore is 46.3%. तो ये जो मैंने राउंड किया है सिर्फ उतना ही पार्ट आपको याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना. इट इज जस्ट टू गिव यू अ पिक्चर, इट इज जस्ट टू शो यू हाउ द डिपॉजिट्स ऑफ द कंट्री आर प्रिवेलिंग दीज डेज. सर, अ लिटिल डाउट, जो करंट अकाउंट में बैलेंस होता है वो सेविंग से कहीं ज्यादा होता है इन करोड़, सो हाउ सेविंग परसेंटेज इज मोर देन, क्योंकि उनका नंबर ऑफ अकाउंट्स भी तो कम है ना. करंट अकाउंट का काउंट, करंट अकाउंट्स का काउंट और सेविंग अकाउंट का काउंट्स तो हमने तो ऐड किया कि 100 रुपए में से आपने कहा कि एक बंदे ने करंट अकाउंट ओपन किया, उसने 20 रुपए डाल दिए, 10 रुपए डाल दिया, एग्री. लेकिन बाकी के जो पैसे बचे उसमें 10 लोगों ने 10 सेविंग अकाउंट में 2-2 रुपए भी डाले, देन ऑल्सो इट इज 20 विच इज ग्रेटर देन 9 रुपीज. तो काउंट इज ऑल्सो अ फैक्टर विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड विच विल गिव क्लैरिटी टू योर डाउट. आई होप इट इज क्लियर. In a single bank or same person with multiple banks, it is overall total deposits with the scheduled commercial banks, overall total deposit with the scheduled commercial banks, उसमें सबसे ज्यादा शेयर किसका है? टर्म डिपॉजिट्स का. और टर्म डिपॉजिट में भी सबसे ज्यादा शेयर किसका है? उन डिपॉजिट्स का विच आर ऑफ वैल्यू ग्रेटर देन 5 करोड़, विच आर ऑफ वैल्यू ग्रेटर देन 5 करोड़. इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? तो सबसे पहले टोटल डिपॉजिट में सबसे ऊपर कौन है? दैट इज टर्म डिपॉजिट. और टर्म डिपॉजिट में सबसे ऊपर कौन है? चाहे तो ग्रेटर देन 1 करोड़ या फिर ग्रेटर देन 5 करोड़. इट डिपेंड्स वॉट एवर डेटा इज बीन आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, यू कैन आंसर इट प्रीटी वेल. ठीक है जी. अब अगला पॉइंट आता है, अगर मैं बात करूं फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स में द डिपॉजिट्स विद मेच्योरिटी of 1 to 3 years they have become dominant and their percentages, तो total deposit में जो medium term deposits है with maturity 1 to 3 years उनका percentage is almost 70%, and due to the change in repo rates, lending rates has decreased, so that it has reflected the decrease in it has reflected a decrease in it has reflected the decrease in deposit rates as well. So right now the share of term deposits which are witnessing an interest rate less than 7% is the majority out of the all. That is 62% of total term deposit is bearing an interest rate less than 7%. As of March 31st, 2026, अगर मैं बात करूं टोटल डिपॉजिट में से 20% डिपॉजिट किसका है? सर, 20% डिपॉजिट इज विद द सीनियर सिटीजंस. 20% deposit is with the senior citizens. Is it clear now? Is it clear now? Easy है ना. मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेटास को आपके लिए मार्क कर दिया. बस जो मैं मार्क कर रहा हूं उतना ही आप पढ़ लेना. दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू. और ये याद करने से ज्यादा इनका जो फ्लो है, इनका ये जो अरेंजमेंट है,
इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसी भी एक ऑर्डर में अपने पास लिखकर याद कर लेना, परसेंटेज भले भूल जाना लेकिन ये ऑर्डर मत भूलना, क्योंकि आरबीआई ऑर्डर पे काफी बार क्वेश्चन बनाता, रिमेंबर दैट. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन. Deposit growth of scheduled commercial banks increased to 11.5%. That is correct. The share of saving deposits declined from 34.6% to 28.7%. क्या ऐसा है देखो जरा. अगर मैं सेविंग अकाउंट्स की बात करूं 34.6% से कम होकर कितना हो गया सर. इट हैज डिक्रीज टू 28.7%. दैट इज करेक्ट. शेयर ऑफ टर्म डिपॉजिट इंक्रीज्ड फ्रॉम 55.2% टू 61.6%. तो अगर मैं टर्म डिपॉजिट्स की बात करूं तो टर्म डिपॉजिट का जो शेयर है दैट इज इंक्रीज फ्रॉम 55.2 टू 61.6%. दिस इज करेक्ट. Public sector banks accounted for 50.8% of the incremental deposit. Is it 50.8? Sir, I guess 59% के आसपास था ना. So this is wrong. Share of RRB in the total deposit has increased from 3.2 to 3.9%. नहीं sir, it has decreased. ये इंक्रीज नहीं हुआ. It has decreased from 3.2 to 2.9%. 3.2 to 2.9%. तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो यहां पे आंसर क्या बनना चाहिए सर. आंसर बनना चाहिए 1, 2 and 3 एंड सर ये तो ऑप्शन ही नहीं है. ये तो ऑप्शन ही नहीं है. अगर ऑप्शन नहीं है तो सर फिर करेक्ट आंसर क्या होगा. अगर ऑप्शन ही नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या होगा. अब मैंने क्या मिस किया. अब मैंने क्या मिस किया देखो जरा, सोचो आराम से. स्टेटमेंट्स को दोबारा पढ़ो. रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली. रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली. ये 59.3% किसके लिए था सर. दैट वाज फॉर हाउस होल्ड सेक्टर. मैंने जो बोला आपने भी वही मान लिया और आप भी कंफ्यूज हो गए. मैंने जानबूझ के बोला था. दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर 59.3%. बट अगर मैं पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करूं तो वो है 50.8% ओनली. तो इंक्रीमेंटल डिपॉजिट में सबसे ज्यादा डिपॉजिट किसके पास आ रहा है. पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास आ रहा है. सो इन दैट केस फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट, फिफ्थ इज रॉन्ग. आंसर इज गोइंग टू बी ए ऑप्शन. तो ये डेटा कंफ्यूजिंग है. ये डेटा कंफ्यूजिंग है. एक दो बार पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे, इट विल बी क्लियर टू यू. एक दो बार पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे, इट विल बी क्लियर टू यू. ठीक है जी. ठीक है, रेडी. अगले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन. आप लोग आंसर्स नहीं कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में तो मुझे भी कोई मतलब नहीं है. इन क्वेश्चंस को अगली क्लास में डिस्कस करना. इफ यू वांट मी टू डिस्कस देम, डू start commenting in the comment section just after the class with the right answers. ठीक है जी. moving on to the next news. अगली न्यूज क्या है. so the next news is related to All India Housing Price Index for the quarter 4 2025-26. अब अगर ये quarter 4 के लिए है so it is not very important. इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं बता देता हूं. सबसे पहला who prepares House Price Index, and it is prepared by RBI every quarter, and the base year is 2022-23. It is prepared from the data. It is prepared on the basis of data coming from how many cities? So that is 18 major cities. All India Housing Price Index has increased. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वैल्यू भले याद ना रहे बट इट हैज इंक्रीज्ड. बट यहाँ पे एक बहुत डिसेंट इंक्रीज है, या मैं कहूंगा बड़ा मिनिमल सा इंक्रीज है. 115.6 है 115.9. यानी कि 100 अगर बेस है 2022-23 तो जो घर पहले 1 करोड़ का था वो 1,15,90,000 का हो गया एज पर द लेटेस्ट इंडेक्स. ठीक है जी. क्लियर हो गई. आई होप इट इज क्लियर. आई होप इट इज क्लियर. सो दैट इज फाइन. The increase was mainly seen in which cities? So the increase was mainly seen in Jaipur, Lucknow and Pune. I hope you must be knowing that the major cities like Gurugram, Delhi or Noida, they have witnessed the price stability in terms of real estate. Now real estate prices are not increasing the way they were increasing earlier because they have already achieved or they have already reached to such a high price or such a high value that we have less number of borrowers, less number of purchasers in the market. तो वहां पे अब मैं कहूंगा कि जो आपकी हाउस होल्ड रियल एस्टेट है
इट इज गेटिंग करेक्टेड। करेक्ट होने का मतलब ये नहीं प्राइस कम हो रहे हैं, करेक्ट होने का मतलब है कि एक प्राइस होल्ड हो गया फॉर 5 years, फॉर 2 years, फॉर 3 years, और अगर वो इंक्रीज नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली वो करेक्ट ही तो हो गया ना। 3 साल में इंक्रीज होना था, नहीं हुआ, अगर उतना ही रहा तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, क्वार्टरली भले डेटा याद रहे या नहीं। ऑन द ईयर बेसिस वी हैव विटनेस्ड एन इंक्रीज ऑफ 4.2%। ऑन द ईयर बेसिस 4.2%, और 4.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस में कौन कौन सी कंट्रीज है, सॉरी सिटीज है सर, जयपुर दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब जयपुर में पूरे साल में भी और लास्ट क्वार्टर में भी सबसे ज्यादा हाउसिंग प्राइस इंक्रीज हुए। सो दिस इज अ सिटी विच यू मस्ट रिमेंबर, एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ 18 cities। जस्ट रीड इट, देयर इज नो नीड टू रिमेंबर इट। ठीक है जी, क्लियर है। क्वेश्चन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि रियल एस्टेट हैज बिकम अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक दीज डेज। तो अगर आरबीआई वहां से क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन विच कैन बी फ्रेम्ड बाय आरबीआई। लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन। The house price index increased to 115.9 from 115.6, correct? The quarter on quarter growth in all India housing price index was 0.2%, 0.2 to 0.3%, that is correct, क्योंकि ये 115.9 और 115.6 को जब हमने कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, so it comes out to be around 0.2% only, that is correct. The increase in quarterly HPI was basically contributed by Jaipur, Lucknow and Pune. Yes sir, Jaipur, Lucknow and Pune. और annual में नागपुर, जयपुर, चंडीगढ़ and कानपुर। उसके बाद year on year growth 4.2%, this is also correct. The year on year growth HPI was lower than the growth recorded in the same quarter. No sir, it was high. इस बार 4.2 है, उससे पहले 3.8 था, so fifth statement is wrong. Answer to this particular question would be A option, that is correct. Take the screenshot of the third question. Take the screenshot of the third question. You have 5 seconds. Okay, I hope it's done. So you have 3 questions for the day as a homework, and I'm expecting that you will be answering them right away. The moment I complete the class, you will be answering the questions, and I will be sharing the PDF on our Telegram channel. That is for you all. That is exam norm for you. Thank you so much. Good luck. See you all at 7 p.m. in the RBI circulars. तो आज हम एक आरबीआई सर्कुलर का सेशन कर रहे हैं फॉर जनवरी मंथ। अगर अभी तक आपने जनवरी मंथ कवर नहीं किया फॉर फाइनेंस करंट अफेयर्स, डोंट वरी, छोड़ दो उसे, मत कवर करो, लेकिन एटलीस्ट ये सर्कुलर्स कवर कर लो। और आज मैं लगभग 10 से 12 सर्कुलर्स पढ़ाऊंगा, एंड आई एश्योर यू, मैं आपको रिटर्न में भी ये गारंटी दे सकता हूं कि अगर जनवरी मंथ से सर्कुलर पे कोई क्वेश्चन आया तो इन 10 से 12 सर्कुलर के बाहर नहीं आएगा। तो 1 घंटे की बात है, 1 घंटा इन्वेस्ट कर लो। अगर एक क्वेश्चन आ गया देन देयर विल बी अ ग्रेट चांसेस टू स्कोर वेल। अब आपको होगी सर 1 मार्क से क्या हो जाएगा, भैया 1-1 मार्क से ही आपकी सिलेक्शन होगी। वो कहता है बूंद बूंद से घड़ा भरता, तो वही चीज है। 7 बजे देखना मत भूलिएगा इस सेशन को। आई विल बी कैचिंग यू ऑल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय।